Hello, students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing the next chapter of chemistry, that is acid, bases, and salts. तो हमारा पहला chapter that was chemical reactions and equations हमने one chapter complete कर दिया. ये chapter थोड़ा सा lengthy and along with कुछ important चीजें, so that's why we're going to complete it in approximately 3 sessions. तो आज हमारा part 1 है. So make sure to like this video, share करो अपने friends के साथ and subscribe to the channel right away. So before starting acid bases and salts, आपने chapter 7th grade में भी पढ़ा होगा, right? हमने 7th पे same chapter पढ़ा है, आपने indicators पढ़े, what are acid, what are bases, what is salt, सब पढ़ा था, right? So इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इंडिकेटर्स. फटाफट से हम इंडिकेटर्स रिवाइज करेंगे. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द आयनाइजेशन. अभी वो एक न्यू टर्म है, सो यस, आयनाइजेशन ऑफ एसिड बेस सॉल्ट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज, pH स्केल एंड सॉल्ट्स. सो दिस इज अ चैप्टर ओवरव्यू के पूरे चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं. आज के सेशन की बात करें, सो वी आर गोइंग टू डू एन क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट एसिड्स बेसिस, फिर हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे एंड एक न्यू टॉपिक दैट इज आयनाइजेशन को डिस्कस करेंगे. So without wasting further time, let us begin with doing an introduction to acids and bases. Now, हमको पता है कि acids और bases हर जगह present है, isn't it? It's true that all of them are present everywhere. Sour taste, bitter taste, all of that is due to the acids. अगर हम कुछ भी खाते हैं, या तो वो खट्टा हो सकता है, या तो it can be bitter. Okay, mostly it is sour only because bitter, it is because of the bases. So acid and bases, both of these give the sour or bitter taste. We can say that. Okay. Now, talking about acids. When I say acid, acids have three major physical properties. Okay, I'm not talking about chemical here. हम physical properties की बात कर रहे हैं, तो physically they are sour in taste. Okay, they are sour in taste, खट्टे होते हैं. Then they are mostly corrosive. ये mostly जब भी हम acid का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में हमेशा corrosion आता है, right? So they are mostly corrosive. अब इसके दो टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मतलब सारे सेफ एसिड्स आपके घर में भी होते हैं. फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड. अभी आप बोलोगे सिट्रिक एसिड हमारे घर पे होता है. देन ऑक्सैलिक एसिड, right? All of these are organic acids which are present inside your home. How? Citric acid. Citric acid is present in your lemons, oranges, citric fruits में. Oxalic acid आपके tomatoes में. Lactic acid milk products में. So that are organic acid. ये हमको harm नहीं पहुंचाते, right? Next comes inorganic, like HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, HNO3, nitric acid, all of these are inorganic. ये highly corrosive होते हैं. Talk about bases, bases opposite, वो bitter होते हैं. ठीक है, कड़वा टेस्ट आता है उनका. They are soapy to touch. Why? Because mostly bases use होते हैं in baking soda, detergent, soaps, इन सारी चीजों में bases का use होता है. So hence they are mostly bitter to taste and soapy. Okay, now comes indicators. Indicators के three types पढ़ेंगे. सिंथेटिक, जो हमने सेवेंथ में पढ़ा है. देन योर नेचुरल, वो भी सेवेंथ में पढ़ा है. और एक न्यू टाइप भी डिस्कस करेंगे, दैट इज द olfactory indicators. स्टार्टिंग विद नेचुरल, जो आपको ऑलरेडी पता है. नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर से हमको मिलते हैं, लाइक लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, onion, vanilla. We leave this onion, vanilla for now. Then we have our turmeric होता है, right? We have litmus papers, we have China rose. All of this give a color change, है ना? लिटमस की बात करें तो रेड और ब्लू होते हैं. टर्मरिक, टर्मरिक क्या होता है? एसिड, एसिडिक कंडीशन में येलो ही रहता है. एंड व्हेन इन बेस, जब उसको बेस में मिक्स करते हैं तो इट टर्न्स रेडिश इन कलर, isn't it? सिमिलरली चाइना रोज पिंक कलर का होता है. एसिड में वो मैजेंटा में टर्न हो जाता है और बेस में वो ग्रीन हो जाता है. अरे सो दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स. उसके बाद आते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर, जो आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में बने, लाइक मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू, फेनोल्फेथलिन, है ना? सो ऑल ऑफ दीज आर योर सिंथेटिक इंडिकेटर्स. ये नेचर से नहीं मिले, हमने बनाए. मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो एसिड्स में वो कलरलेस हो जाते हैं. ठीक है, सॉरी, एसिड्स में वो
रेड हो जाते हैं और बेस में गोल्डन येलो देते हैं। फेनोल्फिथलिन इट इज कलरलेस इन नेचर, एसिड में भी कलरलेस है, और जब बेस में डालते हैं जैसे बैकग्राउंड जैसा पिंक कलर आ जाता है, इट लुक्स मैजिकल। पानी कैसे क्लियर होता है ना, लाइक दैट फेनोल्फिथलिन लुक्स लाइक। जब उसमें एक ड्रॉप बेस का डालो तो पूरा का पूरा वो पिंक हो जाता है। ओके, and the next one is the new type, the olfactory indicators. Olfactors हमारे nose में होते हैं। Okay, they are the olfactory sensors. Okay, आप control coordination में पढ़ोगे in biology. So, ये substances होते हैं जो अपने odor change करते हैं। Olfactory मतलब smell से related। तो onion, vanilla essence, clove oil, all of these are examples of olfactory indicators. जब इनको acids में डालेंगे हम, when we put them in acid, there will be no change of smell. कोई smell change नहीं होगी। बट अगर bases में डालेंगे, जब base में डालेंगे तो ये smell vanish हो जाएगी। Okay, the smell will vanish for all of them. Okay. Now हम बात करते हैं about the ionization of acids and bases. A new topic over here. Now, let us discuss कि we know acids bitter होते ही होते हैं, that are the physical properties. Chemically बात करें, so acids are ionic compounds. When we dissolve them in water, they produce high H plus ions. Okay, and when dissolved in water, the acid stays acidic and conduct electricity, react with metals to create hydrogen gas. ठीक है, तो basically ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, so acids जो होते हैं they are mostly aqueous solutions of non-metallic oxides. ठीक है, so for example, let us say that come over here. See this, हम H2SO4 की बात करते हैं. Okay, H2SO4 की बात करें, so how is it formed? SO3 plus H2O gives us H2SO4, है ना, ये फॉर्मेशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। सो ये कैसे बन रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से बन रहा है। SO3 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, गैसियस फॉर्म में। सो थ्रू दैट एसिड्स आर फॉर्म। अब एंटी स्लाइड लेके डिस्कस करते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज HCl फॉर्मेशन देखते हैं। यू नो व्हाट, हाउ इज HCl फॉर्म्ड? HCl is nothing but HCl plus H2O gives us HCl. Now, what is the difference? Difference is ये वाला HCl is known as hydrogen chloride. इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। ये एसिडिक फॉर्म में नहीं है। वाटर को ऐड करेंगे जब, then we get the hydrochloric acid. So hydrochloric acid or hydrogen chloride both are different things. Formula same है but they are different. HCl when उसको जब पानी में नहीं डालते तब वो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, बट पानी में डाल के it forms the hydrochloric acid. Now you know what happens over here. यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl प्लस H2O बेसिक लेवल पे जाएंगे तो हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के आयन से सेक्रेट होंगे। हाइड्रोजन के आयन सेक्रेट होते हैं, प्लस वाटर सेक्रेट होगा, और साथ में क्लोरीन भी तो सेक्रेट होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड है, isn't it? So if you look over here carefully, H plus और ये इसको मिला के क्या बन जाएगा? Can I say that HCl plus H2O ऐड करें तो can I say we'll get H3O plus, यह एक है यहाँ पे दो ऐड करोगे तो H3O प्लस आ जाएगा, एंड प्लस chlorine, isn't it? Now this thing, this H3O plus is known as the hydronium ion. It is known as the hydronium ion. So this ion H3O plus ये आपके हर एक एसिड में प्रेजेंट होगा, बिकॉज हर एसिड को एक नेगेटिव एज एन एसिडिक नेचर ये H3O plus आयन ही देता है। सी पेरिक्लोरिक एसिड HClO4, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, हर जगह H दिख रहा है। जब उसका फॉर्मेशन पे जाओगे सो यू विल गेट टू नो कि एक हाइड्रोनियम एसिड हमेशा प्रेजेंट रहेगा। टॉक अबाउट बेसिस। बेसिस एज आई सेड दे आर बिटर इन टेस्ट, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं।
और जब the bases which are dissolvable in water, जो water में dissolve हो जाए, they are known as alkalis. Okay, alkalis मतलब which can dissolve in water. A base is a substance which dissolves to produce hydroxide. Okay, क्या है? I'll explain you again. Now, NaOH, what is that? Sodium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, then NH4OH. So what is this? हर जगह hydroxide, hydroxide, hydroxide है. See over this basis. Lithium hydroxide, potassium, sodium hydroxide, potassium, calcium hydroxide, strontium hydroxide, barium hydroxide. तो हर जगह hydroxide ion present है. So let us take one example of NaOH. अब देखो NaOH, your sodium hydroxide plus water H2O gives me Na का एक पॉजिटिव आयन प्लस OH का एक नेगेटिव आयन और साथ में एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर भी प्रोड्यूस होगा. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज हमारा NaOH जब ब्रेक डाउन हो रहा है ओवर हियर, isn't it? It's getting broken down in this situation. So what happens is this OH minus is the basic ion जो basic characteristics देता है. Okay, that is your OH ion. OH ion is responsible for providing the basic character. So चलो color change करते हैं. Hmm. So OH minus is known as the hydroxide or hydroxyl आयन. ठीक है, सो ये आयन OH माइनस हर बेस में होगा बिकॉज इट विल गिव द सॉल्यूशन द बेसिक कैरेक्टर. सो OH माइनस आर प्रेजेंट इन द बेसिस नोन एज द हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्साइड आयन. एसिड्स में होता है हमारा हाइड्रोनियम आयन. ओके, अब aqueous bases and acids they conduct electricity. ठीक है, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइल्यूटेड HCl मतलब हम डाइल्यूट कर रहे हैं. ठीक है, हम HCl को डाइल्यूट कर रहे हैं तो बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इफ यू गो टू योर केमिस्ट्री लैब ऑल्सो यू गेट टू नो जो स्ट्रॉन्ग होते हैं हम उसको थोड़ा सा उनकी वीक कर देते हैं उनको. डाइल्यूटेड HCl bases के लिए NaOH all of this conduct electricity. So bases और acid अगर वो aqueous solution में हो तो वो electricity conduct करेंगे because they have free ions. ठीक है, हमने पढ़ा concentrated and diluted. When I say concentrated HCl एक acid है. It means that it has more amount of हाइड्रोनियम आयन ज्यादा है. पर जब भी हम पानी से मिक्स करते हैं, मिक्स एज इन डाइल्यूट करते हैं, सो दिस डाइल्यूटेड HCl विल कंपैरेटिवली हैव लेस हाइड्रोनियम आयन जिस वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है. सेम इज अप्लाइड टू योर एसिड्स और बेसिस आल्सो. जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उसमें लेट्स से लुक ओवर हियर व्हाट इज इट, लेट्स से NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है. सो NaOH concentrated form में it has high amount of hydroxyl ions. ठीक है, बट जब हम उसको पानी में डाइल्यूट कर देंगे so the diluted NaOH is going to have less amount of OH ions. So that is why it is saturated and concentrated and diluted. अब एक क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन सर, अमोनिया जो अमोनिया होता है इट इज एक्चुअली अ बेस. अमोनिया इज एक्चुअली अ बेस बट उसके पास इट डजंट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन. अब देखो क्या होता है कि आर दिस थिंगी द अमोनिया. ठीक है, अमोनिया की बात करें सो अमोनिया इज एक्चुअली अ बेस. ठीक है, एक बेस होता है वो. Now, okay, the pen is not coming. Okay, listen. So what happens is, let me duplicate this slide. Huh, yeah, देखो. So what happens is, when we talk about this thing, your ammonia, ammonia का form होता है NH3.
ना NH3 में आपको दिख रहा है कि इधर हाइड्रोक्साइड जैसा कुछ भी? हाइड्रोक्साइड इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, isn't it? Hydroxyl ion या hydroxide ion is not present in this solution, isn't it? So क्या होता है कि your duplicate, hmm. So see, what happens is जब हमारे पास NH3 होता है, so when we add it, so देखो NH3 प्लस H2O जब हम ऐड करें ना, तो हमको मिलता है सब्सटेंस NH4OH, ठीक है, ये सब्सटेंस मिलता है। अब कैन यू सी OH इज प्रेजेंट, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको मिल जाएगा NH4, ओके, प्लस OH माइनस, और OH माइनस आपको मिल रहा है, हमारा हाइड्रोक्सिल आयन इज प्रेजेंट ओवर हियर, मतलब वो ऑब्वियसली एक बेस ही होगा, isn't it? So you got your answer. Why is it the base? ठीक है. So with this, students, we have completed with our today's session. Thank you so much for watching. So आज के सेशन में हमने पढ़ा what are acid bases and या acid and bases indicators क्या होते हैं. We also studied उनके basic और acidic nature, उनको कहाँ से मिलता है. Acidic nature is due to your H3O ions, hydronium ions, और basic nature is due to your hydroxyl or hydroxide ion, OH minus. So all this is all about today's session. अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज जब एसिड्स बेसिस मेटल्स नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है. So we are going to see that in our next session. Till then, take care, goodbye, and make sure to like this video, share with your other friends as well, and subscribe to the channel.